Okay, hello everyone, welcome to my YouTube channel. And the topic for today is retinoid, the truth about retinoid. Retinoid पर्सनली मेरा फेवरेट स्किन केयर इंग्रेडिएंट है. अगर कोई मुझे बोले कि लाइफ लॉन्ग मुझे सारे एक्टिव्स डिच कर देने हैं और एक एक्टिव मैं यूज़ कर सकती हूँ, तो आई डेफिनेटली गो फॉर माई रेटिनॉइड. एंड मैं I'll just paste a picture of my before skin and now you can see the after result. And all this has been made possible because of retinol. Like a lot of other things was also involved, but retinol एक बहुत ही major factor था to contribute in clearing up my skin, fighting with acne and the marks that was left behind because of that acne. So let's get into it. तो पहले समझते हैं कि रेटिनॉइड है क्या. रेटिनॉइड विटामिन ए का एक डेरिवेटिव है और ये बहुत सारी फॉर्म्स में मार्केट में अवेलेबल है. सबसे ज़्यादा जो कॉमनली हम देखते हैं रेटिनॉइड में, दैट इज़ रेटिनॉल. सो रेटिनॉल सीरम्स में भी अवेलेबल है, क्रीम्स में भी अवेलेबल है. मेरे पास यहाँ पे है थोड़े. ये ओले का रेटिनॉल सीरम है और ये ओले का ही रेटिनॉल क्रीम फॉर्म में है. जो सबसे माइल्ड फॉर्म होता है रेटिनॉइड का वो रेटिनॉल होता है. और उसके ऊपर भी बहुत सारे उससे स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि ट्रेटिनोइन है. लाइक दिस इज़ अ ट्रेटिनोइन क्रीम. इट्स 0.025% ट्रेटिनोइन. सो मोस्टली ये दो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं मार्केट में, तो हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. उसके अलावा भी बहुत सारे और रेटिनॉइड होते हैं, बट आई विल लिमिट आवर डिस्कशन टू दीज टू इन दिस वीडियो. तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन है. Okay, so now let's look into the advantages of using a retinol. Retinol is going to help with your acne, it's going to help with your hyperpigmentation, it's going to minimize your pores, it's going to help with your wrinkles, your fine lines, it's going to improve your skin texture. Basically, it is the best ingredient, like मैं starting से बोल रही हूँ, the best ingredient ever. ओके नाउ सो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है. तो इसको यूज़ करते हुए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. इसको धीरे धीरे अपने स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करना है. एंड इट्स बेटर दैट यू यूज़ इट एट नाइट बिकॉज रेटिनॉल आपके स्किन को थोड़ा सा सेंसिटिव कर देता है. इट कैन कॉज ड्राइनेस. सो इट्स बेटर दैट यू यूज़ इट एट नाइट एंड मे बी इंक्लूड इट इन योर स्किन केयर रूटीन स्टार्टिंग फ्रॉम 3 times a week. Start from retinol and then maybe later you can move to tretinoin because it's stronger than retinol. Okay, now the question is कि इसको यूज़ कैसे करना है. Every time you're using retinol, make sure that you moisturize after because retinol can actually dry up your skin. So बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि स्किन पील हो रहा है, ड्राई हो गया है, स्किन बहुत सेंसिटिव हो गया है. इसके वजह से लोग रेटिनॉल कंटिन्यू नहीं करते हैं. तो एंड उसके वजह से इफ़ यू विल नॉट कंटिन्यू इट, यू विल नॉट सी द बेनिफिट्स ऑफ रेटिनॉल. सो धीरे धीरे इंक्लूड करना है. बहुत मिनिमल अमाउंट आप उसका लें, थोड़ा थोड़ा उसको लगाएं, देखिए कि क्या रिस्पॉन्स है, कितना सेंसिटिव आपका स्किन हो रहा है उससे, कैसे क्या टॉलरेंस है आपके स्किन का उसके लिए. एंड धीरे धीरे उसको आप इंक्लूड करें एंड डेफिनेटली यू विल सी द बेनिफिट्स ऑफ अ रेटिनॉल. एंड मेक श्योर टू मॉइस्चराइज आफ्टर यूजिंग अ रेटिनॉल. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कवर योर आईलिड्स विद अ गुड मॉइस्चराइजर एंड यू डोंट यूज योर रेटिनॉल देयर बिकॉज आँख के पास का जो स्किन होता है वो बहुत पतला होता है. एंड रेटिनॉल कैन एक्चुअली डैमेज द मॉइस्चर barrier of your skin there if you use it, or if you use it in excess amount and don't use a moisturizer afterwards, that also can cause damage to your moisture barrier. So that's very important to remember. उसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सनस्क्रीन यूज़ करें आफ्टर यूजिंग अ रेटिनॉल बिकॉज एज आई सेड रेटिनॉल विल मेक योर स्किन सेंसिटिव एंड इट्स एंड इफ you go out in sun and your skin is sensitive, the sun can actually cause a lot of damage to your skin. So it's very important to use a sunscreen whenever you're using a retinol. So make sure that in the morning use a good sunscreen, SPF 50+, reapply your sunscreen every 4 hours. That's very important. तो धीरे धीरे एज के साथ क्या होता है कि हम लोगों का कोलाजन प्रोडक्शन कम हो जाता है. उसके वजह से स्किन सेल का टर्नओवर भी कम हो जाता है एंड वी डेवलप फाइन लाइन, रिंकल्स, और जो हाइपर पिगमेंटेशन होता है उसको, या कोई डार्क स्पॉट हो गया, एक्ने हो गया, तो उसको हील होने में बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगने लगता है. तो पहले अगर इफ़ यू आर लाइक 15 एंड कोई हल्का सा मार्क आया, यू विल सी कि वो बहुत जल्दी हील होता है. बट एज यू ग्रो ओल्डर वो हीलिंग टाइम धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है. दैट्स बिकॉज योर सेल टर्नओवर slows down with time. So what retinoid do is that it penetrates deep into your skin
and there's a cell called fibroblast. It stimulates that fibroblast, which in turn stimulates the collagen production. अब collagen production जैसे जैसे बढ़ता है आपके स्किन में, वैसे वैसे स्किन का सेल टर्नओवर भी बढ़ता रहता है, and you get that nice glowy good skin. So normally a lot of doctors recommend that you don't use a retinol if you're pregnant or if you're lactating, and I asked the same from my dermatologist and he recommended me the same. So I'm not pregnant or lactating, but yeah, if in case you are, make sure you don't use it for some time. And there are other actives that are safe that you can actually include in your skincare, like niacinamide, hyaluronic acid. It's all very safe and you can use it during pregnancy, but yeah, retinol, be a little mindful and don't use it. So a lot of people in their 20s, उनको ये कंसर्न रहता है कि अभी मैं 20 साल की हूँ, अभी मैं 20 साल का हूँ, do I actually need to use a tretinoin or a retinoid in my skincare routine? ये एंटी एजिंग चीज़ों की मुझे क्या ज़रूरत है? So definitely you don't need it. All you need is a sunscreen to prevent skin cancer, but if you want to achieve that good, dewy, juicy, nice look, tretinoin can actually help you achieve that. And if you start it from a young age, it's going to actually help you maintain a nice and good skin for a longer period of time, because जो collagen production होता है वो 20 साल के बाद ही हम लोग के बॉडी में धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है. So, I mean, if you're looking for that dewy, nice, glowy skin, and if you want to prevent fine lines and wrinkles and premature aging, definitely retinol is a good ingredient for you. Okay, one more thing associated with retinol that you might actually face is called purging. So purging में क्या होता है कि जो आपके स्किन के नीचे एक्सेस सीबम है, आपके क्लॉक्ड पोर्स हैं, जैसे जैसे आप रेटिनॉल यूज़ करना स्टार्ट करेंगे वो धीरे धीरे सर्फेस पे आना चालू होंगे. तो स्टार्टिंग के 2 से 3 हफ्ते जो आपका स्किन है वो और ख़राब होगा, एंड लोग रेटिनॉल स्टार्ट करते हैं यूज़ करना और वो ये सब चीज़ें देखते हैं, उसकी वजह से वो रेटिनॉल यूज़ करना छोड़ देते हैं. बट बिफोर यू एक्चुअली गेट दैट dewy, glowy, fresh skin, you'll actually have to go through purging. In some cases, not in all the cases, but it's also very important to understand the difference between purging and a breakout. So I'll make a separate video on that, but yeah, do remember when you start using it, this is actually a potential thing that can happen. You can face purging. And lastly, one thing that I like to say is that be patient. Give it some time. Don't give up. If you're facing issues, like when I first started using tretinoin, मैं उसको इतना सारा अपने फेस पे लगा लिया एंड मेरा फेस जलने लगा, पूरा रेड हो गया एंड हैड टू वॉश इट ऑफ. सो धीरे धीरे इंक्लूड करना है, बहुत छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट लेना है. स्किन केयर में लेस इज मोर, रिमेंबर दैट. सो आफ्टर दैट व्हेन आई स्टार्टेड, व्हेन माई स्किन developed tolerance for it, धीरे धीरे मैंने उसका quantity increase किया, and that's when I started actually seeing the difference. It took me 3 to 6 months, and minimum it's gonna take you 3 to 6 months to actually see a difference. So don't give up, be patient with this ingredient, and you'll definitely see the results.